India is set to begin random testing of 2% of international passengers at airports from today in what has been one of the several preparatory steps, with many parts of the world, including China, witnessing a resurgence in the spread of COVID-19. Now, in a communication, the Ministry of Civil Aviation said that airlines are required to direct their crew members to lead and bring identified 2% of international arriving passengers to the testing facility at the airport. Now, in a communication, the Ministry of Civil Aviation also said that, of course, 2% of the international arriving passengers have to be at the facility, and after the random testing, the passenger has to furnish the correct contact and address details to the airport officers. And airlines concerned will also be identifying such travellers on each flight, preferably from different countries. These travellers can also leave the airport after giving the samples. A copy of the positive report will be shared with the Integrated Disease Surveillance Program by the airport concerned. Now, they'll also be sharing with the states and union territories whatever further follow-up action is needed on these particular patients and the test results that come post that. All right, this of course the details are on your screen of what the airport testing will be like, what you can expect if you're an international traveller, and what domestic travellers can expect at the airports. Now, testing facilities are going to be set up. 2% of travellers are going to be identified by flight crew, and then they are going to be sent for random testing at the pop-up stalls that have been kept in the airports for testing. They have also been then going to also follow up with state governments and union territories for any follow-ups that are needed if any of these samples turn out to be positive. This is the latest information we're getting in from what the Civil Aviation Ministry has said in terms of the random testing that is going to be starting in airports. Now, this of course comes as China is seeing a major surge in COVID-19 cases, and several other countries also now starting to see a spike in the number of cases. India has now started its preparations, and precautions have been put in place. The systems have been put in place to track, treat and trace any of these symptoms and any of the spread that can be seen across India. I have my colleague Manohar joining me on the broadcast. Manohar, take us through exactly what the Civil Aviation Ministry's announcement was. What are the directions now given to airports? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो आज देश भर के तमाम एयरपोर्ट से रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। 2% इंटरनेशनल पैसेंजर का रैंडम सैंपलिंग हो रही है। इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद इंटरनेशनल पैसेंजर्स को जाने दिया जाएगा, क्योंकि पैसेंजर्स की ज्यादातर शिकायतें होती है कि लेट लगी, तो किसी को भी देर ना हो, इस वजह से पूरी तैयारी की जा चुकी है। और ये मुफ्त में किया जाएगा, आरटीपीसीआर का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से गाइडलाइंस भी बनाई गई है। गाइडलाइंस अभी 25 दिसंबर कल है, न्यू ईयर आ रहा है, तमाम फेस्टिव सीजन्स को लेकर के तैयारी की गई है। गाइडलाइंस जारी की गई है कि क्राउड इकट्ठा ना हो, लोग चाहे तो मास्क पहन करके जाए। हालांकि मास्क को मैंडेट नहीं किया गया है, लोग अपने से ही मास्क पहने और इसका हिदायत दें, ज़्यादा क्राउडेड ना हो, क्योंकि फेस्टिव है सीजन है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कल तमाम राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक ली है, और बैठक में सारी गाइडलाइंस को लेकर के किस तरह से हमें ट्रेसिंग करना है, ट्रीटमेंट देना है और वैक्सीन प्रिकॉशन डोज को बढ़ाना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के बैठक हुई है, सबको जानकारी दी गई है। और 27 दिसंबर को अगर हम कहें तो देश भर में मॉक ड्रिल होगा, क्योंकि मॉक ड्रिल में ये बात देखी जाएगी कि क्या तैयारियां हैं, तैयारियों की सच्चाई का भी पता चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि नेजल जो वैक्सीन है, इनको वैक जो भारत बायोटेक का है, उसको भी मंजूरी मिल गई है, कोविन ऐप पे मौजूद है और जल्द ही लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। जी Right, Manohar, also take us through these the preparations that have been already put
in place in the airports. Now, have they started testing people? Has a random testing begun already? What information can you give us from what's on ground, what's happening right now? देखिए, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी भी वही है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से सारी हिदायतें और सारी जानकारियां दे दी गई है। आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। 2% रैंडम सैंपलिंग की जा रही है तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, और ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कल जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये सवाल भी खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि चीन से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं दिल्ली में, उनकी डीलिंग कम किया जाए और कम से कम फ्लाइटें आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह का प्रपोजल उन्होंने दिया और देर शाम होते होते गाइडलाइंस भी आ गई है और आज से उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, फ्री में किया गया है, न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट बल्कि देश के सभी एयरपोर्ट। अगर हम मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें या जो छोटे छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं, उनमें भी ये सारी व्यवस्था की गई है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.